Students, welcome to the online class of computer. In the previous lecture, we have seen Microsoft Word 2010. We have seen some features of it. Okay, how to start that, start Word, and what is the features of the Microsoft Word. Okay, in this lecture, we are going to see some more things about the Microsoft Word. So open your page number 31. Finally, your document should look like as shown here. So we have also studied in the live class as well as in the उसमें भी हमने देखा कैसे हमने ये फॉर्मेट कर चुके थे, तो हमने ये भी देखा हाउ इट इज़ डन. ओके, सो दिस थिंग्स वी हैव लर्न इन आवर लाइव क्लास एज वेल एज इन द प्रीवियस लेक्चर. कैसे फॉर्मेट करना है, you can see in the picture bold, italic, underline, make the use of subscript, superscript, text effect कैसे देना है वो सब हमने देखा था पिछले लेक्चर में. ओके, now we are going to see. Remember that format painter is very useful facility of Word, and you must be familiar with it and should know the proper use of it. You may practice format painter by changing the format of Gandhi word in the previous file and then apply the formatting to all the Gandhi's word in the file using format painter. If you select the format painter button by clicking only one time, then you can apply it only one time. But if you select format painter button by double clicking, then you can apply formatting as many places as as you want to it apply. Okay, so students, you can see here you can use the format painter Gandhi word as the capital you want, and you can again in the which there was an essay written in the previous lecture. We have seen Mahatma Gandhi, there was a essay, right? So we can format the word Gandhi and how many times it comes. If you want G capital in all the words, we can do the format painter. We can select the format painter and we can select the other Gandhi as well. Okay, so they will be changed. Okay, so the word will be changed, the format of the word will be changed as the same as the first word will be there. Okay students, practicing example. Now here it is an example given here. Format painter. Prepare the above document and make format painter word of the file first line bold and red. Now using the format painter look, apply this effects all the words written which is within inverted commas in the document. So here you have the you have to prepare this document and you can format the words in using the format painter using bold and red. Okay, okay, now here there is another table which we have another practice you can do here. Prepare the above document and create this list using bullets and numbering options of paragraph group. Also give text highlighted, underline and text effect in the respective list items. So students, you can see here there is a screen, there is are two example given here. You can prepare at home and you can color them, or you can make it bold, you can make it underline. So different things is there when you are preparing. So here it is a better example given of the format painter. You can make use of format painter as well as you can make the mix of colors and the paragraph. You also a number line and bullets you can make the use, and you can prepare the following table. Okay students, moving on page number 32, insert tab. Now what is insert tab? The insert tab is very useful to insert different objects like pictures, clip art, shapes, smart art, chart, page break, etc. There are 7 groups in insert tab, namely pages, tables, illustration, links, headers and footers. Text and symbol. Let us understand some of the options of insert tab. Okay, so here insert tab is there and you can see here pictures, clip art, shapes, smart art and page break. So these are the different objects in the insert tab. Okay, and it has the 7 groups. उसमें कितने 7 ग्रुप होते, उसमें कौन कौन से आते, पेजेस आते, उसमें टेबल्स आते, इलस्ट्रेशन आते, लिंक्स आते, हेडर आते, फुटर आते. ओके, सो दिस आर डिफरेंट थिंग्स. पेजेस सबको पता है, उस पेजेस जैसे हम पेजेस नोटबुक के पेजेस होते हैं उसी तरीके से
टेबल्स मीन्स यू कैन ड्रॉ अ चार्ट बना सकते हो उसमें। और इलस्ट्रेशन एंड लिंक्स ऑल ऑफ यू नो व्हाट्स द लिंक्स, यूट्यूब के आपको लिंक सेंड होती है, वैसे ये लिंक्स होती है। हेडर एंड फुटर, सो यू कैन यूज हेडर मतलब ऊपर का भाग, और फुटर मतलब पूरा पेज का कितना होना चाहिए, छोटा बड़ा, वो आप इससे कर सकते हो हेडर एंड फुटर से। टेक्स्ट एंड सिम्बॉल्स आर देयर, ओके, that are also there, different symbols are there. Now let us understand some of the other option of insert tab. Page groups. Now we are going to see page groups. Cover page, used to insert a pre-formatted cover page for the document. It provides some text boxes which you can enter title and other details about the document. अब कवर पेज क्या होता है? जनरली कवर पेज वो होता है जो आपका हेडिंग पेज होता है। इससे आप अलग अलग तरीके से कवर पेज बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, डू नॉट कॉपी, और एकदम अच्छी तरीके से और बनाना है, तो जो आपका बुक का कवर होता है वो कैसा कलरफुल होता है, उसी तरीके से आप वर्ड के अंदर कलरफुल कवर पेज भी बना सकते हो जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है उससे। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैंक पेज। इंसर्ट अ ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजिशन। ओके, अब इंसर्ट अ ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। सो यहाँ पे ब्लैंक पेज क्रिएट करने के लिए आपको खाली पेज इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट कर सकते हो। पेज ब्रेक, इंसर्ट अ पेज ब्रेक एट द कर्सर पोजीशन एंड स्टार्ट अ न्यू पेज। ओके, सो पेज जहाँ पे आपको कट करना है वहाँ पे आप कट कर सकते हो और न्यू पेज वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज अवर पेज ग्रुप। सो व्हाट वी हैव कवर इन दिस, cover page, blank page and page break. Now let us see illustration group. First is picture, used to insert picture in the file. The option works same as it works in WordPad. Now WordPad में वैसे यूज़ होता है वैसे ही वर्ड में यूज़ होता है। यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, सिमिलर है। क्लिप आर्ट, यूज टू इंसर्ट रेडीमेड मेड क्लिप आर्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। सो क्लिप आर्ट्स बनाने काम में आता है, मतलब आप क्लिप आर्ट चूज़ कर सकते हो आपके कंप्यूटर में। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन विल ओपन क्लिप आर्ट पैन ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्ड स्क्रीन as shown here. Type the necessary text in the search for box and click go. Your word will show clips art related to the text entered by you. The search screen shows the result when computer word is entered in the search for text. You can then double click and clip art to insert the document. So इसमें आप क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिप आर्ट करके ऑप्शन आपको राइट साइड पे आपके टेक्स्ट बुक पे दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा। आप कंप्यूटर वहाँ पे टाइप करके सर्च फॉर में क्लिक करोगे, आपको रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगे उसके। ओके, सो ये आपके कंप्यूटर में ही है और बहुत सारे ऑप्शन इसमें क्लिप आर्ट्स में कंप्यूटर रिलेटेड एंड डिफरेंट ऑप्शंस आर रिलेटेड। ओके, सो जस्ट क्लिप ओपन द क्लिप आर्ट पेन and search for and go. Okay, that's the 3 steps you can make the use of clip art. Next topic, shapes. Used to insert ready-made shapes like rectangle, block rows, flow rows, stars and banners, clayouts, etc. Clicking on this option will show a drop down menu as shown here. From this menu you can select the shape which you want to insert in your document. So these are the things which we have to keep in mind. Means if you are to add any arrow, rectangle, flowchart, banner, callouts, anything in this, there is option on the right side, you can see options are open. So in this way you can add the shapes and different banners and flowcharts, okay, using the shapes group. Okay, so this was our word chapter. Okay, so what we have learned today, we have learned how to make the documents and how to format the words. Okay, we are used to format the words in a beautiful manner, which we can use the make of numbers and we can make the use of bullets and numbering also. We have also seen insert tab in which there are clip arts, pictures, clip art, shapes, smart art, chart and page break things are there. Okay, so different there tools are there. First we have seen the page group in which we can make cover page, blank page and page break. We can make use of 3 of them. In illustration group we have seen picture, clip art and shape. So this was our
word chapter. So that's for all today now. Thank you and have a nice day.